Salutation to the God. According Hindi language, अभिवादन सभी को. According Nepali language, अभिवादन सबैलाई. अभिवादन सबैलाई. Salutation to the God. God, actually we are actually God. We can know clearly according Sanskrit language. We can know the real nature of the God which we are. So we should know. To know according Sanskrit language, drashta mukta praya asi sarvada. The Sanskrit language, Sanskrit words, that is drashta mukta praya asi sarvada. Drashta means who knows all. Who knows all. That is knower. Knower, known, knowing, knowledge. Knowledge, the main thing, knowledge. This is according pure consciousness, knowledge. And three, knower, known, knowing, or knower, knowing, known. Three parts. Main parts is knower, who knows all. According Sanskrit, drashta, according world teacher, Pratham Jagat Guru Shankaracharya, drashta means God. According Pratham Jagat Guru Shankaracharya, very famous teacher of the world, Pratham Jagat Guru Shankaracharya, according he, drashta, if we know the meaning of drashta, then automatically we can realize God. So, according Sanskrit, the word drashta, very, very important. And according the most famous teacher, Ashtavakra, says about drashta, Sanskrit word drashta, he says in the book of Ashtavakra Gita, first chapter, 7th verse, there has written, drashta mukta praya. Mukta praya means always salvation. Always salvation. Always we can feel of salvation. Mukta praya asi sarvada. Asi sarvada. According Hindi, hamesha, hardam. Drashta mukta praya. Mukta praya asi sarvada. According the most famous teacher of the world, Ashtavakra, named Ashtavakra, he says, ekah drashta asi sarvasya
मुक्त प्राय असि सर्वदा. This is the verse, slok. According that verse, वो श्लोक अनुसार, अकॉर्डिंग हिंदी, वो श्लोक अनुसार एक दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्राय असि सर्वदा. It means drashta means God. Which position? The position of a drashta, always the position of God. Because according Pratham Jagat Guru Shankaracharya, the way to realize God, that is drashta. That is drashta. Drashta means who knows all. Who means that is always different from the world, because that is knower, drashta, sakshi, witness, sakshi, witness. Sakshi always different from the Cincinnati world. Witness, sakshi. Sakshi and drashta same. The meaning same, drashta and sakshi. So now we can be converted into the God from this way. From the way, according the most famous teacher, Ashtavakra. Ajila, the most famous teacher, Pratham Jagat Guru Shankaracharya. So, this is the path, this is the way. If we follow, we should follow, because human being always according truth line. Human all follows truth. Human being never follow false. Human being always follows truth line, never follows false line. The world is the culture of death and birth, mortal culture, tension culture, troubles culture, no ending culture. In the world, no ending. Ending only we can get according God, according truth, that is according drashta. Today means 2025, New Year, new month, first month, January, today 10th, today Friday, according Hinduism, Paush Shukla Paksha, today Ekadashi. Ekadashi, today's Ekadashi, the name of today's Ekadashi is Putrada Ekadashi. Putrada Ekadashi, son, the real son. That's a real son. The name of a real son is Saptami. Saptami, the real son of the world, the real son of the human being. Named Saptami means there is 7 elements. There is 7 elements. The 7
The first drashta, second sushupta, third ananda, fourth Bhagavan. According Nepali, matre apu ho. According Hindi, केवल अपना स्वरूप है. According Nepali, केवल आफू मात्र हो. केवल means only. Apu means self. Ho means yes, immortal. So seven odes of Saptami, the name of a real sun. Saptami, seven elements. These are, that is Drashta, Sushupta, Ananda, Bhagavan, Matre, Apuho. 7 words. Saptami. Putrada Ekadashi, today. This is very important because we can feel always full of pleasure, full of immortality. We can always feel according pure consciousness, pure intelligence. What is full of pleasure always. So the device, the path, the way to know the God, that is Drashta. This presenting by President of Immortal Pleasance Center, according Nepali Akhand Sukha Kendra, from Nepal country, from Nepal Bhairava city, Parasi city, Palpa Tansen city, Butol city. Now we are listening and telling about our actual nature, that is Drashta. Now I describe in Hindi language and Nepalese language, Abhivadan Paramatma. परमात्मा ही सबका असली स्वरूप है. ये जानने के लिए विश्व प्रसिद्ध गुरु अष्टावक्र, जिसने अष्टावक्र गीता में प्रथम प्रकरण 7 श्लोक में ये कहा गया है कि अर्थात दृष्टा के बारे में बोले हैं जो अकाट्य है, परम सत्य है, जो परमात्मा के अनुभव करने के लिए सबसे असली रास्ता है, वो है एक दृष्टा असि सर्वस्य. एक दृष्टा असि सर्वस्य. एक दृष्टा ही सबका असली स्वरूप है. सबका मतलब अज्ञान का दृष्टा. सबका मतलब मनोवृत्ति का दृष्टा. दृष्टा मीन्स जो दृष्टा है उसका मतलब है सारा भौतिक संसार के दृष्टा. वो है परमात्मा. प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं सीधो सीधा परमात्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसको बीच में साधन पकड़ना पड़ेगा. जैसा भैरवा से काठमांडू जाना है तो पहले, हवाईजहाज से जाना है तो पहले एयरपोर्ट में जाना होगा. जब हम लोग एयरपोर्ट में जाएंगे तब राजधानी काठमांडू में पहुंच जाएंगे. इसलिए एयरपोर्ट जरूरी है पहले जाने के लिए. वैसा ही एयरपोर्ट जैसा दृष्टा है. जहां दृष्टा को ले लिया तहां हम लोग परमात्मा में पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है. यह है प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य का रास्ता. साक्षी का दृष्टा, दृष्टा का साक्षी का उपाय, दृष्टा का उपाय, रास्ता.
रास्ता, मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, परम आनंद में रहने के लिए रास्ता, सारा टेंशन को खत्म करने के लिए रास्ता, सारा दुख चिंता को खत्म करने के लिए रास्ता यही है। नेपालीज ल्याङ्ग्वेज अभिवादन सबैलाई परमात्मामा बदलिनको लागि विश्व प्रसिद्ध गुरु अष्टावक्रले अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण 7 श्लोकमा भन्नुभएको छ, एक द्रष्टा असि सर्वस्य। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ मुक्त प्राय अत्यन्त मुक्त, मुक्त प्राय अत्यन्त मुक्त, असि सर्वदा सधैँको लागि हुन्छ। यो निश्चित कुरा हो। यही उपदेश पाएर राजा जनक जो शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मुक्त हुनुभयो, जीवन मुक्त हुनुभयो, देह मुक्त हुनुभयो, संसारमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। आत्मपुराणले व्याख्या गरेको छ, राजा जनक जीवन मुक्त देह मुक्त हो भनेर प्रमाण हो। त्यसकारणले हामीले वर्तमानमा अहिले, किन भविष्य भोलि होइन, भरे भोलि हाम्रो अधीन छैन, यति बेला हाम्रो अधीन छ। अहिले जो निश्चय गर्यो त्यही सधैँका लागि हुन्छ। यदि अहिले निश्चय गरेर रहेन भने अनि मृत्युको संस्कार, जन्मने मर्ने, जन्मने सर्ने, मर्ने जन्मने, यो क्रम 84 लाखतिर घुमिराख्ने। त्यसकारणले यति बेला मौका छ। जस्तो फलामलाई रातो तताउँदा पिटपाट गर्यो भने भाँडो बनिहाल्छ, चाहेको भाँडा बनिहाल्छ। त्यस्तै अहिले रातो फलामको रातो जस्तै समय हो। अहिले निश्चय गर्यो भने सधैँलाई हुन्छ, गरेन भने अल्टाल गर्यो भने सधैँलाई 84 लाख जीवन, जन्म लिने मर्ने, जन्म लिने मर्ने, सर्ने, चिन्ता लिने, दुःखमा डुब्ने, यसै गरी सारा जीवन कटाउने। त्यसकारणले यो मौका छ। यो मौकालाई उपयोग गर्यो भने जाने तुलसी नजाने झार। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।